ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुके। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में, और हम अध्ययन कर रहे हैं चौथे अध्याय का 20वां श्लोक। We welcome you to Bhagavad Gita class. We are studying 4th chapter, verse number 20. कर्म के ऊपर विवेचना की। Bhagavan explained about karma, and he said that बहुत कठिन है। it is very difficult to understand the tattva of karma. जो कर्म में अकर्म देखता है, One who sees akarma in karma and karma in akarma, Bhagavan said that such a person is wise. पिछले श्लोक में उन्होंने In the previous verse, पंडित शब्द से प्रबोधित किया। he said that such a person is pandita, पूरित हो गए हैं, यानी कि उसके मन में one भौतिक कामना नहीं, who doesn't have any material desires to obtain anything, ज्ञान की अग्नि से उसके सारे कर्म दग्ध हो गए हैं, and his karma is burnt by the fire of knowledge. उसको बुद्धिमान लोग भी पंडित बोलते हैं। So Bhagavan said that even wise people call him a pandit, not just some sadhakas. होता है कि ज्ञान की अग्नि से उसके पुराने कर्म तो दग्ध हो गए हैं, ज्ञान। So here the question is
that with the fire of knowledge his previous karma लेकिन जो is कर्म burnt. अभी करेगा But what about the karma that he will perform in the present तो उनका क्या होगा, after obtaining knowledge? What about those उसको karmas? भोगना पड़ेगा, Will he have to suffer उसको the परिणाम मिलेगा। results of those karma? Will he be become bound इसके by बारे that? में भगवान So इस श्लोक regarding में that, यहाँ Bhagavan is speaking this verse. त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जिसने कर्म और उसके फलों के प्रति समस्त Having आसक्ति renounced को all त्याग दिया, attachment to action and its जो fruits, सदैव being संतुष्ट ever रहता है satisfied and और without किसी dependence कार्य on में नहीं others, होता, such a ऐसे व्यक्ति person पूर्ण रूप does से nothing भगवान at में all, स्थित होकर भी though fully engaged in action. तो यहाँ विशेष तौर से ये बात कही है So त्यक्त्वा here, especially, अभिप्रवृत्तों की। Bhagavan is telling, अभिप्रवृत्त माने सब प्रकार के, यानी कि पूर्ण रूप से वो कर्म Abhipravritta means fully engaged. कर्म नहीं करता है, Not that he doesn't perform karma or he has taken इससे यह पता sannyas. चलता है कि यहाँ पर So from this we also understand that the topic being discussed here is karma yoga, not about sannyas. संन्यास का प्रकरण आ गया है, The तो इस sannyas अध्याय section में will come up later. हुआ भी Here he is telling, even पूर्ण रूप से while कर्म doing और karma, and not just doing karma, fully engaged in action, कुछ नहीं करता है। still he doesn't do कहने का anything. मतलब ये नहीं कि वो करता नहीं है, Doesn't do anything does not literally mean he doesn't do anything, बंधन नहीं but what it means is that he does not become bound by the karma. पहले कहा कि जो कर्म में अकर्म Not doing anything means what was explained earlier. कर्म कर रहा He है, sees akarma in karma, लेकिन meaning he is performing karma, फल में but उसका बंधन नहीं because है, he is not bound by the results ये of the इसी karma. प्रकार है जैसे वो कर्म ना कर रहा हो। So it is as if he was नहीं, not doing any action. एवकार कहा यहाँ पर। एवकार संस्कृत में निश्चय के लिए प्रयोग किया जाता है कि इसमें किसी को कोई The शंका eva नहीं is है। used for used in the sense of certainty in Sanskrit, meaning that there is no doubt whether he will be bound, not bound, बिल्कुल भी, and kinchit means दोनों ही no शब्द doubt at all. एवकार और किंचित So eva इस and बात को kinchit निर्देशित करते हैं both indicate कि कर्म से that पूर्ण रूप such से a मुक्त person रहना, will be completely free from कर्म karma, करते हुए भी। even while doing यही karma. विज्ञान जो है भगवान यहाँ इस अध्याय में वो देना चाह रहे हैं। This is the knowledge that दूसरे Bhagavan अध्याय में wants भी to ये बात impart थी, in this chapter. भी पांचवें में भी। In the third also he यहाँ पर explained this, in the fourth also, then fifth also. जोर दे रहे हैं इस बात पर He is कि किस placing प्रकार lot से of emphasis कर्म on करके this कर्म point, के बंधन से how to perform karma and still remain away from the bondage कर्म of त्याग karma. पर नहीं है, Bhagavan is not giving emphasis on giving up karma, कर्म करते हुए किस प्रकार आप but मुक्त रहें, while performing karma, how to remain free. That is what he is explaining. भी इसी बात को कहेंगे। Till 18th chapter also he will explain this, स्वे that कर्मण्येवाधिकारं how सिद्धिं लभते, one can कि अपने अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करते हुए कैसे perform karma according to his or her nature होता है, मोक्ष को प्राप्त and करते still हैं, इस achieve प्रकार के perfection, से achieve मुक्त होता moksha, है। liberation, तो इसी meaning भगवान he doesn't become bound by karma. और क्योंकि ये So बहुत Bhagavan जल्दी से speaks about this many times, and because it is not understood easily, समझाते हैं, that is why श्लोक he में explains अनुवाद this में through इससे आगे वाले in various इसी ways. बात को वास्तव में विभिन्न शब्दावली से वो कह रहे हैं। He is explaining the same point using different words. इन सब श्लोकों में The essence of these verses is यही है one only, फला संग, that कि कर्म में जो फल है उसमें असंग रहे। the to remain detached from ऐसा the नहीं है कि कर्म fruits का of फल नहीं karma. आएगा, It is not that you will not get the result of karma. If you perform karma, you will get the result, but not to become सारी attached to समस्या that, जो है वो आसक्ति से ही because बनती है। all the problems are due to attachment only. द्वितीय अध्याय में भी उन्होंने कहा था, In the second chapter also he had explained. ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते उपजायते संगात संजायते कामे, तो आसक्ति जब हो जाती है So when तो उसी से attachment फिर happens, राग द्वेष then क्रोध due to that attachment, ये सब raga, पैदा dvesh, होते हैं, attachment and aversion, and then moha, that is bewilderment, all this happens. So this is the parampara of इसलिए avidya. क्योंकि ये बात जल्दी से
समझ में नहीं आती है, Bhagavan is explaining ध्यान से सुन this, लो। and it is not easy to understand this, हल्के no लिए matter how many times we हल्के लिए listen to काम this, करते हैं, because our prior experience has always been to work for result. उसके बगैर काम करना ये हमारी बुद्धि में है। Working without the desire for result, it is not सोचने easily वाली बात ये है understood. कि But कर्म का the और फल का point to reflect upon is वास्तव that में हमारा both स्वरूप karma से and the result both have nothing to do with our own ये बात swarupa. भगवान ने दूसरे अध्याय के बिल्कुल आरंभ में कही थी What Bhagavan कि हम told शरीर नहीं है, right in the हम beginning of चेतन है, second chapter, that और you are कर्म not जो this भी body, करते you हैं are हम different शरीर from के this body, and शरीर whatever के we निमित्त do, हैं, it is all by the body ये only. भेद है, लेकिन Our है क्या mind, senses, वो all हमारा part of स्वरूप body है। only. They are all our body only, and this is not और our हालांकि swarupa. आप जो कुछ भी फल प्राप्त करते हैं और जो कुछ So भी आप whatever करते हैं results वो you हमारी obtain, प्रकृति whatever के karma you do, it is outside your swarupa. भगवान ने कहा पहले Bhagavan told earlier जितने भी कर्म that हैं वो प्रकृति के द्वारा ही all होते the हैं, karmas which are there, they are done by प्रकृति prakriti से only, होते हैं सब कर्म सर्वशा, and prakriti is made of लेकिन gunas. उसको हम अपना मान लेते हैं। But we ये assume बात है, that it is our karma. तो वो केवल मानना ही है, So it is just in the mind that मानी we हुई think बात है, that it is वास्तविकता नहीं है। ours. It is not the reality. जैसे हमारे जितने भी यहाँ संबंध हैं Like whatever relations we have in एक this साथ तो वो बने world हुए ही हैं, with each other, वास्तव this में is उनका all in कोई our शारीरिक mind. बंधन थोड़े ही है, There is no वो such माना हुआ है। physical level of relationship. It is in हमें the mind. अपने को छोड़ने के लिए जानना पड़ेगा, And if we have to give it up नहीं from तो the वो mind, छूटेगा then नहीं। first we need the understanding, we इसी need the प्रकार जो knowledge. कर्म है ये Without होता knowing, है we cannot give it शरीर up. में, Similarly, और हमारे whatever स्वरूप से karmas बाहर are है, happening in the body, they are all outside our Swarupa. They are not inside the उसमें कोई Swarupa. कर्म नहीं होता है, There is no karma in the Atma. अपरिणामी है, It is निरंतर है। Nishkriya, it is aparinami, it does not transform. वो अपना मान जब मान लेता है But तो when उसी से it समस्या होती है। assumes that this karma is mine, then the ये problem अहंकार है, arises. तो So इसलिए हमको because it समस्या is में just फंसाया in the जाता है mind we think like that, और so हमको it ये नहीं we समझ में can give आता। it up only by understanding. There is no other अगर way. आपके मन में बैठ जाए कि 2 + 2 = 5 है, If you think उसका that 2 plus रिजल्ट 2 is equal to 5, कर्म suppose हो गया, due to some तो reason समझने से ही you आप think उसको this, छोड़ेंगे जब आप so समझेंगे कि then नहीं दो you जमा can दो give up बराबर that 4 है। understanding इसी only when you प्रकार get the right understanding that 2 plus 2 is 4 इसी and not प्रकार 5. जो है ये Similarly, केवल मानी हुई बात है, it is just, लेकिन ये this is मान just in इतना the mind, गहरा बैठ गया है हमारे अंदर, but it is so deep rooted, इसका इतना it has अभ्यास हमको हो गया है become, it has कि gone इसको so deep, जानने we की have practiced it so आवश्यकता many है ही times that even after understanding, even after knowing, it becomes इतना very गहरा difficult to है कि give it ऐसा up. लगता है कि नहीं ये Due कैसे to illusion, we have this wrong और इसी understanding प्रकार से that है how is जैसे it possible to work without attachment हमने to result. जाना हुआ है It is बचपन से like from childhood, कि if you are wearing green colored जिसका spectacles, आप so उतार then दें you see everything is तो green, ये हरा and ही रहेगा, suppose you cannot give it up, उसको and कैसे somebody accept says करेंगे। that no, it is not green, it बड़े is होकर हमें white. कहेंगे How आपने will you गलत accept बताया। it? No matter how much one इसी says, प्रकार ये जो you will, अविद्या because है you are seeing it as green वो only. गहरे स्तर पर हमारे So चित्त this में बैठी हुई avidya है has gone so deep in कि our ये chitta सुनकर भी that even सोचते हैं after hearing, तो आप ये we do अनुभव not करके ही बताइए। understand this. जो द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा What Bhagavan said in the second chapter, even after hearing, और जब one does not understand this. जानने And का until मतलब and क्या है unless you understand this, here understanding means experiencing. तो तभी ये छूटेगा। When you और experience, then इसीलिए only you will be भगवान able to इसको give up. बार बार यहाँ पर बोलते हैं And that's what Bhagavan is telling here again and again. और जब ये कर्म फल का संग छूट जाएगा तो फिर And नित्य when this attachment to तो नित्य karma तृप्त phal will आदमी के अंदर एक go away, संतुष्टि then you होगी, will always remain वो satisfied. जिस भी स्थिति में है उसमें संतुष्ट रहेगा वो। In whatever situation we are, we will नहीं remain तो satisfied. जब आपके अंदर कर्म फल की इच्छा रहेगी तो उसमें असंतोष रहेगा, क्योंकि जब तक Otherwise, when we will have attachment to the result of karma, we cannot remain satisfied. इच्छा है, कामना है, Whatever desire you have, वासना जो है उसका मतलब ये एक
whatever vasanas you have. It's like a यानी कि हम अपने अंदर hunger. एक प्रकार का अभाव अनुभव करते हैं It's like a feeling of some deficit or scarcity in our life, को that पूरा I करने am के लिए lacking something and I want to fill up the उसके लिए gap, fill the gap. हैं And in order to fill it, we और perform जितनी भी आप क्रिया activities, करते we हैं perform action. उससे जो So भी आप whatever प्राप्त we करते do, हैं whatever we वो attain भी through our टेम्पररी actions, होती है those results are और क्योंकि वो attained at material समझते level हैं कि only. जो चीज़ And because they are आवश्यक at है material level, उसमें whatever you दो obtain, चीज़ें आवश्यक हैं उसके two द्वारा things are essential in that. एक तो जो भी प्राप्त करेंगे वो सीमित Whatever होगा you will obtain, it will इसकी be जो वस्तु limited. है It is not और जो possible to नहीं obtain होगा something unlimited. वो अनित्य And होगा whatever you will obtain will be temporary also. It will not be eternal. और तीसरा ये है कि वो जो भी होगा And third point is that whatever you will obtain will be material. It will not be spiritual. लेकिन हमारा जो अपना स्वरूप है But our own वो Swarupa, चेतन स्वरूप है it is spiritual. और उस चेतन की पूर्ति जड़ से संभव ही नहीं है And it is not possible जो चीज़ to fill it जिस by वस्तु से something बनी हुई है material. उसकी पूर्ति करना Any तो उस वस्तु object, से उसकी whatever it पूर्ति is हो made up सकती है of, it can be उस filled by वस्तु से that only. तत्व से उसकी You पूर्ति नहीं cannot हो fill it सकती by some other element. तो पहली बात तो ये है कि हमारे So first स्वरूप point में is that in our इस Swarupa, कामनाओं से जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं इनका whatever we want to obtain through these भाव desires, हमने अपने ऊपर there आरोपित is किया हुआ we है actually do not have any scarcity. तो This feeling of scarcity has been ये imposed ऐसा externally. संभव नहीं है कि चेतन वस्तु में जड़ It is का not possible जड़ की कोई आवश्यकता पड़े that anything spiritual will ever need anything material. तो हम सत हैं और We सत्ता are का Sat, कभी अभाव and नहीं होता है there is never any abhava of सत्यते Sat. सतः पहले भगवान ने कहा कि जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं होता है और जो असत है उसका कभी भाव नहीं होता है And whatever is Asat, there is never any bhava of that. और जो भी हमको So all संसार this में body चाहिए and whatever is related to the body, वास्तव whatever में हमारे worldly स्वरूप में objects we असत है obtain, our relation with that is Asat. वो वस्तुएं तो हैं Those objects are वो भी there, है हम भी हैं body is also लेकिन there, उसके we are साथ में also हमारा there, जो संबंध है but whatever relation we have with वास्तव that, संबंध है ही that नहीं relation is Asat, because that हमें relation doesn't भ्रम है exist कि कोई only. संबंध है It is just in our mind. वास्तव में संबंध है नहीं और क्योंकि There वो is है no ही नहीं relation जो actually. चीज है ही नहीं उससे And if it आपको is not there, वास्तविकता क्या then प्राप्त हो सकती है how can you attain anything real out of it? जैसे बकरी के गले में वो दो स्तन जैसी चीजें लटकी रहती हैं तो Hmm. उसमें से तो So दूध those मिलेगा नहीं two आपको breast-like features that hang from the neck of दूसरा goat, so you will not get milk out उससे of that. आपको दूध प्राप्त करना है लेकिन उनको सोचें कि ये स्तन है So if तो you उनसे तो आपको wrongly दूध नहीं assume प्राप्त that they होने are वाला breast, you will not get milk out तो of ऐसे that. ही जितने यहाँ पर विषय Similarly, हैं उनके साथ में हमारा कोई भी संबंध नहीं है और जब संबंध ही नहीं है तो उससे हमको सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ये असंभव है और इसलिए कभी भी कोई इन वस्तुओं से तृप्त होता नहीं है nobody ever becomes satisfied किसी की by these तृप्ति भी देखी नहीं objects. जाती है जो थोड़ी We बहुत don't तृप्ति see होती anybody है being वो satisfied. क्षणिक होती है वो भी वास्तविक Whatever उसके कारण satisfaction टिकाऊ नहीं happens, होती it है is just लेकिन temporary. उस वस्तु It के is लिए not हमारी जो कामना due है to तो objects. थोड़ी देर के लिए वो कामना It समाप्त हो is जाएगी simply because और उसके our बाद वही desires, कामना there is फिर से cessation of our desires temporarily. और उस कामना के कारण आपको अभाव अनुभव होता है Due जब to उस those वस्तु आपको desire, मिल when you have जाती है desires, you feel some तो scarcity, वो कामना and समाप्त हो when जाती you है get the और object, कामना then that समाप्त होने के बाद desire जो is कामना के द्वारा finished. अभाव की अनुभूति हो रही थी And when the desire उस is अभाव को finished, अब हानि then the होने feeling लगती of है scarcity that was generated by that desire, that feeling is also gone. So just temporarily, it आप is kind of like you experience your swarupa and you feel वास्तव में उस some वस्तु से satisfaction. संतुष्टि नहीं होती है So actually, you क्योंकि अगर have उस not वस्तु से experienced संतुष्टि होती satisfaction due to that object. तो हमेशा Because if चाहिए that would have been the case, then you would have always जैसे felt मीठे में satisfaction. मिठास है तो हमेशा ही चीनी को Like खाना if चाहिए there is sweetness in sugar, ऐसा you कभी should नहीं है always feel कि that.
It is not that today you experience sweetness, next day you तो इसलिए experience अगर salty उन taste. वस्तुओं से हमको वास्तव में ही तृप्ति होती है So if those तो objects वो तृप्ति हमको will मिल ही जाती actually है, give satisfaction, then लेकिन that ऐसा should happen होता है always. कुछ देर But के it लिए doesn't तृप्ति happen. होती है, यानी कि हमारी कामना समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर The satisfaction क्या happens होता है, नई temporarily. कामनाएं पैदा होती हैं Temporarily, some desires go away, but after some time, again, there are new और बढ़ जाती desires. हैं, And when there are new desires, स्थिति हो जाती then है जो पहले नहीं again, थी। same situation, तो what you इसलिए experienced earlier. कभी भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता है, That's why actually nobody is ever satisfied. क्योंकि हमने देखा है जीवन में कि हमारी कोई भी इच्छा रहती है, जब वो इच्छा पूरी हो गई, जब We वो have इच्छा seen that when we have पूरी हो desires, जाएगी तब हम बहुत खुश होते हैं। when the desires are not fulfilled, we feel that on fulfillment we will be happy. होती है कि And when the desires are fulfilled, we experience some happiness temporarily, and after that again we have new desires. उसमें मैं When we अच्छा used to go खुश to school, we used to think that होता हूँ, if we get first rank, फिर वो we will be सोचता हूँ कि happy. मेरे को बढ़िया नौकरी मिल जाए, And then उसके you लिए think that if I get good job, किया था, then we'll be happy. नौकरी Then you लग get गई, job and become शादी हो happy. गई, Now you feel that when I get married, I'll be happy. पड़ाव And then you get उसमें marriage also. अनुभव होती है तृप्ति थोड़ी देर के लिए, So at every लेकिन वो stoppage, क्षणिक ही रहती है। you feel some temporary happiness. बच्चे, फिर अब बच्चे And हो then जाते after हैं, that, then there are children. Now you have to educate the children, get them married. कामनाओं का चक्र चलता So रहता है, this cycle of desires नित्य continues. तृप्ति But here what is said, that वो nitya कभी नहीं tripti, होती। everlasting satisfaction, that never इसका मतलब happens. होता है कि आपकी तृप्ति कभी समाप्त नहीं So होती। nitya tripti श्री means your रामानुजाचार्य satisfaction will never be finished. करते हैं इसका So Sri मतलब Ramanujacharya gives an नित्य excellent meaning. नित्य स्वात्मनि एव तृप्त, कि नित्य का मतलब आपकी आत्मा, वो He नित्य says है, here, Nitya means your Atma. Atma is Nitya, means to be satisfied in the Atma नित्य अपने itself, स्वरूप में स्थित होकर तदात्मनो meaning स्वरूप अवस्थानम, जैसे to be गीता में कहा situated है, in the Swarupa. तो उससे तृप्त होना वही नित्य तृप्ति। तो यानी कि जब तक आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं Meaning, होंगे, as long as you do not become पहचानेंगे नहीं situated in your Swarupa, you do not साक्षात्कार recognize yourself, when you do not become self realized, till then you will not इसलिए be आगे भगवान Nitya कहते Tripta, हैं you will not रासलीला get में everlasting satisfaction. कि आप जितनी भी बाहर की चीजें हैं So Bhagavan says उन that पर आश्रित whatever मत होइए, external objects are there, do चाहे वो not कोई व्यक्ति है, become dependent चाहे on कोई that. स्थान है, Whether it is some चाहे कोई human being समय or है, some place or some या कोई time परिस्थिति है, or some situation, कुछ भी है, whatever it is. उस पर अगर आश्रित होंगे तो आप If you कभी भी तृप्त नहीं हो सकते, become dependent on क्योंकि that, वो then you will परिवर्तन never समय become के अनुसार satisfied. बदल जाएगा, Because आप जिस if अवस्था it में you are होंगे dependent on a certain timing, आपका the time स्वरूप will बदल change. जाएगा, आप किसी व्यक्ति पर आश्रित Youth होंगे, will go व्यक्ति away. बदल जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु If हो you are जाएगी, dependent on some person, that स्थान है, person may change, he may समाज में die. आपका कोई पद है, तो उससे भी आप Place may पृथक also हो जाएंगे। change. If you have some position, post, that may also change. You may be removed इसलिए from जो भी that. ये चीजें हैं, So इन पर all अगर आप these things आश्रित which are होंगे there, if तो you become ये dependent on समस्या that, है, then this will be इसलिए the भगवान कहते हैं problem. निराश्रय। So Bhagavan तो says, निराश्रय का मतलब don't ये नहीं है कि आप nirashraya, कोई don't be आश्रय नहीं है, dependent on आपका that. आश्रय प्रभु है। इसके लिए भगवान स्वयं बोलते हैं So गीता में nirashraya does not mean we do not have any ashraya. Bhagavan is our ashraya. कि मैं गति हूँ, मैं भरता हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं सुहृद हूँ, मैं सखा हूँ, साक्षी हूँ और मैं शरण हूँ। तो स्वयं वो बताते हैं इस बात को, So Bhagavan himself गीता says में that he is the shelter. वो स्पष्ट बोलते हैं कि At सर्वधर्मान in the end in Gita he tells very clearly. तो जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आएंगे तब तक हम किसी और वस्तु Until and की unless we take shelter of Bhagavan, we keep taking shelter of वो some वस्तु other हमारी भी हो object. सकती है That object may be और हमारा अपना अभिमान भी हो external सकता है, हम or अपने it may अभिमान के be चलते our own ego also. We may मैं सर्वसमर्थ हूँ, मैं remain सब कुछ कर sheltered सकता हूँ, under our own ego. I am this, I am that, I तो can वो do क्या this or झूठा है, that. So this is वो all सामर्थ्य है नहीं, केवल false. कहने वाली बात है। Nobody जिससे actually ये अनुभव has होता है कि any
capability like this. And after some time, everyone realizes this. Those who think they are very great, very capable in any field. So, with passage of time, their capability also reduces, goes away. Great sportsmen, runners, wrestlers, boxers, you see them, चाहे ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, whether they have been उनकी Olympic शारीरिक gold medalists व्यायाम or कुछ नहीं whatever. रहती है। See what is their situation after अगर 15 or मोहम्मद अली 20 देख लेते years. हैं, They can't even walk मोहम्मद अली बहुत properly. बड़ा बॉक्सर था अपने जमाने का। Muhammad Ali was a great boxer in उसका his हाल ही youth, में मैंने एक वीडियो but देखा था, you चलता see हुआ his भागता video था, in old age, even while सीधा walking, खड़ा he नहीं was रहता था, shaking. He could not even उस walk समय वो properly. अपने आप से चल भी नहीं सकता था। लेकिन एक दिन ऐसा था कि जब वो बॉक्सिंग रिंग में होता था तो But there was a day when he was in the boxing ring, he used to jump with excitement. Nobody could stand in front of him. ऐसे ही हर विषय में है, लोगों की So, स्मृति this is in every बहुत field. बड़ा विद्वान समझते हैं Somebody किसी thinks को, he is very intelligent, but if he loses his memory in the तो इसलिए old इन age, चीज़ों का आश्रय भी नहीं लेना चाहिए। so we should not take shelter of आश्रय जो है कोई all this, भारी वस्तु का ही नहीं होना चाहिए, because अपनी योग्यता का भी आश्रय लेना shelter चाहिए। is not just of external objects. We take shelter of our capabilities also. तो अभिमान तो We आदमी become very proud that we are very capable of doing this or तुरंत that, टूट जाता है। but that is also temporary. तो इसलिए हमारा That आश्रय ego जो है also gets भगवान crushed. वो है, So our shelter, our ashray is Bhagavan किसी only. किसी का भी आश्रय लेंगे Except Bhagavan, तो वो केवल anything दुख that we take shelter of will only give us suffering. हमको केवल कष्ट पाना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। Because of that, we will only suffer. तो जितने भी सांसारिक आश्रय हैं उनका All the worldly परिणाम shelters that we have, their end result is only मुझे suffering. ऐसा लगता है कि इससे मेरे को बहुत सुख मिल रहा है, मेरे बहुत अनुकूल है, Temporarily, you may feel लेकिन उसका that अंतिम परिणाम you जो are है getting lot of उसमें बहुत happiness, दुख है। but its final result will always be suffering. Vishada जो Yoga, अध्याय है ना, वो भौतिक जगत में प्रत्येक आश्रय का the yoga of विषाद ही होगा। dejection, बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा like है, that of भगवत first गीता chapter में of Bhagavad Gita. उनके बहुत बड़े बड़े We have seen lot of बिजनेस great wealthy people having huge business लोग देखे empires. जाते हैं तो At लोग the कहते हैं end, वो अपने ही they suffer. पारिवारिक लोग हैं, ऐसा Their है, own उसमें family झगड़ा members, करते हैं और उनको they कोई fight सुनता नहीं है। among themselves and nobody listens to them. तो जब तक आदमी Nobody listens to सांसारिक this old man. वस्तुओं का आश्रय लेगा So, तब as तक वो long as दुखी you रहेगा। keep taking shelter of ये worldly सांसारिक objects, आश्रय you will suffer, अस्थाई हैं because और these worldly shelters, they are किसी की temporary, they are limited. आपकी वास्तव में सारी आकांक्षाओं को पूरी भी नहीं कर सकते हैं। जीव They गोस्वामी cannot एक actually बात कहते fulfill हैं कि all जब your कोई बहुत desires. बड़ी Sri Jiva Goswami makes one point. समर्थ He says भगवान that आप पर कृपा करता है, if a person is कृपालो not दयामय capable, but दुखाय एव he gives कृपालु, you mercy तो उसकी कृपा or की he is वृष्टि बहती है। compassionate towards you, then वो that बहुत compassion or mercy will also bring suffering जो आप only, चाहता वो दे नहीं सकता है, जो आप because he is चाहते not वो आपको capable कर नहीं सकता है। and he cannot do anything for you आप actually. सोचेंगे कि So इससे he मेरे will को कुछ suffer, प्राप्त हो जाएगा, वो and कुछ नहीं you होगा, think that I will get something out of आप him, दुखी रहेंगे। something from him, you will also कृपालो keep suffering. असमर्थ से दुखाय एव कृपालु, तो दुख ही उससे मिलता है। और So you अगर will only समर्थ get व्यक्ति है, dukkha out of it. समर्थ And if से he is a capable person, सुखाय एव कृपालु, तो समर्थ तो केवल एक भगवान ही है, प्रभु actually only Bhagavan is all capable. इसलिए उन्हीं के समर में शरण में जाना। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, भगवान जो कहते हैं कि Bhagavan उन्हीं की says शरण आप सर्व भाव से, पूर्ण भाव से सब कुछ समर्पित करके that उन्हीं की with शरण में Purna जाना। Bhav you should take और his किसी की shelter शरण में only. आप अगर जाएंगे If you take any shelter of तो anyone आपको else, समस्या ही होगी। then you will only यहाँ encounter गीता में भी problems. हम देखते हैं कि So अर्जुन here ने in Gita भगवान की शरण also ली, we see that Arjuna took shelter of Bhagavan, दुर्योधन ने and अपने आचार्य Duryodhan, सेना और अपने जो भाई बंधु कर्ण दुशासन उनकी शरण ली, तो परिणाम सामने ही है। he took shelter of his brothers Karna, उनको सब कुछ खो Dushasan. गया। So we know the result. तो ये हमारे सामने Duryodhan lost everything.
उदाहरण है। So we तो see ऐसा this कौन व्यक्ति example होगा जो in Mahabharata. सब कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ देगा So such a और person निराश who will give up attachment to वो karma ऐसी phala, स्थिति में to the results of actions, and remains detached, and in such a state of mind, whatever कर्म जो है karma he वो does, his karma is to be treated as akarma only. उन्होंने कहा कि कर्मणि अकर्म What Bhagavan said in Gita earlier. कर्मणि च कर्म स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त है कृत्स्न कर्म कृत, उसी का यहाँ पर विस्तार से What Bhagavan said, वर्णन भगवान that is what he is explaining here in detail. He is expanding on that concept he told earlier. तो ये व्यक्ति कर्म How to करता see है akarma in karma. So this person, he performs karma, और but his दूसरे karma व्यक्ति is को akarma इस only. प्रकार नहीं है जो And the other person who is not वो अगर कर्म नहीं भी करता है this, तो भी उसका कर्म बंधन ही हो रहा who is attached, even if he is not doing anything, still whatever he does will bring attachment. Even if while he is eating food, that will also lead to suffering. सांस भी लेता है तो उससे भी Even when he is breathing, that is also going to cause bondage, because if you are not doing anything, at least you will breathe. That will also lead to bondage, because he is still indebted. He has to pay off the debts. That is why here Bhagavan is explaining, he is teaching how to seek akarma in karma. थोड़ा और तरीके से आगे Now बढ़ेंगे this same point he is now explaining in more detail in the व्यक्ति next verse. How थोड़ा निवृत्ति परायण हो जाता है कि ज्यादा कुछ नहीं करता a है person becomes nivritti parayan, means he goes towards the nivritti marg, meaning he performs action just for maintenance of body. त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, जिसमें भोग की Translation: लालसा नहीं, devoid of craving for enjoyment, मन और being controlled in mind and body, जिसने and सर्वथा having relinquished all sense of proprietorship over all objects of enjoyment, such a person does not incur sin, even while engaged in action, simply for maintenance of the body. तो जो पहले श्लोक में कहा गया था त्यक्त्वा कर्म फला संगे नित्य तृप्तो निराश, So what was told in the previous verse, थोड़ा और दूसरे he is वर्णन करते explaining that here. He is explaining same point in a little different way. जो बोला त्यक्त्वा कर्म फला संग, तो उसका यहाँ वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से वो निराशी है। So here he is explaining how that person who is devoid of attachment to result, he is nirashi, means he is devoid of craving. मतलब कामना। Asha means kamana, desire. भागवत में Like in Śrīmad-Bhāgavatam, वचन आता है it is said आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, कि आशा एक जीवन में that रखना के desires or craving, that when such and such thing will happen in life, then I will be happy. That is called asha. In Sanskrit, asha also means disha, direction, उस तरफ दृष्टि रखना, meaning to always आशा का मतलब है कि have the vision focused in the future, वर्तमान में नहीं, always living in the future, not in the present. वर्तमान में तो हमको सब अभाव ही दिखाई देता है, वर्तमान में हमको सुख In the present we see scarcity, abhava only. नित्य तृप्ता, What was told in the previous verse, nitya tripta, वो संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है, that is about और जो आदमी present. आशा में And the person who lives with desires, he is dissatisfied, he is not living in the present, he always thinks about future, सुख प्राप्त होगा, he always thinks that I will get sukha, happiness tomorrow. और ये समय बदलेगा फिर अच्छे दिन। Currently I am going through a bad phase of time. तो इस तरह बहुत लोग अपने विचार रखते हैं भविष्य के बारे में। So like this, many people think about their future. ऐसा नहीं सोचता है, कर्मयोगी जो
So रहता this है, उसकी person निराशा doesn't think like this. वो अभी वर्तमान में ही तृप्त रहता है, ऐसा नहीं कि भविष्य में मेरे को तृप्ति He मिलेगी remains satisfied in the present itself, not that he thinks या that मेरे को he'll get satisfaction पद in प्राप्त हो future. जाएगा या ये वस्तु So his प्राप्त हो जाएगी satisfaction doesn't depend या on ऐसा getting घर some प्राप्त हो post in जाएगा future or या some मैं चला जाऊंगा दूसरी जगह relocating to some place in तो future. मेरे को आनंद मिलेगा, Then I will कुछ be लोग happy. अपना देश Some छोड़ के people दूसरे think देश like जाना that. चाहते हैं कि उनको वहाँ पे कुछ अच्छा They अवसर want to मिलेगा, relocate to some other ज़्यादा country. धन कमा सकेंगे, There ज़्यादा you सुख can earn सकेंगे, more wealth. तो उसके लिए बहुत लालायित रहते हैं So they have दूसरे देश all में these मुझे जाना जाना desires. है, I have to go to some उसके लिए foreign भी उनको country बड़ी and there I have to स्पर्धाएं earn lot of I can earn lot of money. तो So their ऐसा mind लगता है is वहाँ जा करके focused on मेरे को that only. सुख आनंद मिलेगा, And they think लेकिन वहाँ that जा करके after फिर going there I will get lot of वहाँ जो लोग happiness. रहते हैं ना, But then the point वहाँ जो is लोग people are रहते हैं living वो there भी also. So first you should check the people who are ऐसा तो staying होता there, नहीं are है they कि कोई happy? देश ऐसा हो कि वहाँ के सब लोग So सुखी it हों, is not that there is no such country where all the citizens are happy. That is not लेकिन वहाँ possible ऐसा anywhere. सोचते हैं कि आप वहाँ But एकदम you think सुखी like हैं। this, अब वो बात अलग है कि आपकी that स्थिति after relocating there you will become happy. Now यहाँ it से is वहाँ के possible लिए that compared to your यात्रा present करना ज़्यादा situation, ठीक रहता है, you may be in a better financial position if you go there, you may have a bigger बहुत home कुछ सुविधाएं आपको मिल or you सकती may हैं, have पैसा better खर्च नहीं करना facilities. पड़ेगा, All that is possible. लेकिन उनके कुछ समय बाद But में वो आपके लिए साधारण हो जाएंगी, after some time they will also तो आपको appear वहाँ की ordinary for तुलना you. दिन तक आपकी This स्मृति में comparison रहेगी, that you are making, आप it will last in जब your memory स्थिति में only for a रहेंगे, short period of time. स्थिति में रहेंगे तब तक आपको थोड़ा As आनंद long मिलेगा, as you are staying there, लेकिन ऐसा तो keeping है the नहीं कि आप जैसे ही previous उनको आनंद state of ध्यान में life रखेंगे, in memory, till then you will keep comparing तो and ऐसा you नहीं may है feel कि happier. But that also will fade away. जो समृद्ध देश के निवासी हैं And also, there are such उस देश people. में चले जाएंगे तो वहाँ हमको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, कुछ ऐसे लोग सोचते हैं ना, हमारे भारत के बारे में ऐसा सोचते हैं कुछ Many विदेशी people think like this about India. Foreigners, they think about India. They think that in India, people are very poor, लेकिन क्या they भारत में are सब सुखी हैं? suffering. But the point is everyone suffering in India? It is not हो like that. सकता है कि यहाँ के लोग ज़्यादा सुखी हों वहाँ की वजह से, Maybe the people here are क्योंकि much वो स्थितियों happier पे compared to people there वास्तव में बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता है, because लेकिन बहुत this लोग तो sukha, बिना happiness, does not depend on external डर के objects. बैठते हैं जा रहे हो, But many foreigners, they feel scared to come to India. लेकिन Their situation is very यहाँ पर bad. रहते हैं या जो रह रहे हैं वो तो ऐसा नहीं But सोचते, those who are coming here, those who are staying here, ये they don't think आत्मिक like दृष्टि this. से ऐसा होता है जब हम तुलना So it करते is हैं just a comparison. अपनी स्थिति से दूसरे स्थिति की, तो ऐसा लगता है कि उनकी स्थिति अच्छी है, उनकी When we स्थिति compare ठीक our है, present इसलिए हम situation सुखी with हैं, others, then लेकिन we जब आप feel उस that our स्थिति में चले situation जाते is हैं not good. तो तुलना The कुछ other समय one is बाद in a बंद better हो जाती है, situation. But when you change आप your तुलना करने situation, लगते हैं, so for उस small स्थिति में period of time रहने you may लगते हैं, feel happy. But then what वो जो happens? You पहले become सुख used to मिला that था, जो situation. आरोग्य था, वो आपको साधारण That same लगने लगता home, है, what you felt earlier that it is वो very big, धन जो आपको now it पहले appears अच्छा लगता ordinary था, to you. वो धन जो पहले आपको लगा था कि मेरे को बहुत अच्छा The मिला wealth है, that you have, तो ये एक you are बहुत feeling that बढ़िया I got lot of बढ़िया wealth. Now स्थिति that है becomes मनुष्य में, ordinary for you. Now you want even पुनर more. एव विवर्धते नई जातु काम कामा नाम उपभोगे न साम्यते हविषा कृष्ण वर्तमेव पुनरेव विवर्धते, तो आपकी कामना जो है ना वो शांत होती नहीं है, So your desires actually उसमें don't become satisfied. निराशी, और निराशी का मतलब है कि ये अंदर वाली वस्तु का That's why त्याग Bhagavan says Nirashi, meaning और devoid of the craving जो अर्थ for है, enjoyment. तो Here त्यक्त he सर्व said परिग्रह Tyakta जो Sarva बाहरी Parigraha, वस्तु है उसको meaning का, the external objects to give them up. निराशी का मतलब अंदर And वाली here वस्तु, Nirashi means to give up त्याग the दो प्रकार का है, internal one. आपके जो अंदर में Tyaga is of two वासनाएं हैं, types. कामनाएं One हैं, is the vasanas, the desires और that जो you बाहरी have वस्तुएं within, हैं, to give them up. And the other भौतिक is वस्तुएं, the external objects, worldly objects, to दोनों give them वस्तुएं up. यहाँ बताई गई हैं, So त्याग here के लिए कहा गया both are है, referred. और For बाहरी the वस्तुओं internal के one, लिए Bhagavan is telling त्यक्त सर्व Nirashi, परिग्रह, and for the external one, Bhagavan is saying Tyakta Sarva Parigraha. और जब आपकी
And when you become nirashi, कामना नहीं होगी तो फिर ये meaning you do not have desires within, फिर आपका चित्त then यानी कि मन, आत्मा, इंद्रिय इत्यादि your chitta, meaning your mind, नियंत्रण हो जाएगा। senses, etc., you will achieve self control over रहेगी them. तब तक आपका मन नियंत्रित नहीं As होगा। long as you और have जितनी ज़्यादा desires, कामनाएं होंगी your mind उतना cannot मन be आपका चंचल रहेगा। controlled. The more you have desires, the यही more your हमारी जो mind will keep कामनाएं हैं flickering. यही मन को चंचल These बनाती है। desires that we have, they make अगर the कामनाएं mind कम होंगी very chanchal or तो मन शांत flickering. रहेगा। If जैसे desires are not there or less, then mind will be peaceful. तो उसके मन में कोई कामना Like होती नहीं है, an infant जो baby, होती है उसको तो यही it doesn't have any कामना होती है desires. कि He मैं is बस just वही कर्म hungry, करूं। just wants the food, that's all. वो केवल वही कर्म करता है जो शरीर संबंधी है, His भोजन actions are just पोषण related to the basic और needs of body, मलमूत्र त्याग, hunger, इससे ज्यादा तो बच्चा छोटा सा बच्चा कुछ etc. करता नहीं है। The infant baby और doesn't उसके do मन में anything more than this. He doesn't have any other कोई इच्छा desire नहीं है, because he doesn't have any इसलिए such वो सुखी रहता capability. है। So he तो वो remains अविद्या के peaceful. कारण है। But that is due to उसमें avidya. अविद्या का इतना प्रभाव है, उसकी इंद्रियां जो है वो विकसित नहीं हुई Avidya है, is so उसकी powerful बुद्धि that अभी इतने विकसित नहीं since हुए हैं, उसका the कोई अनुभव नहीं है, senses have not developed now and he संसार doesn't से। have any worldly तो इसलिए उसको experience, विषयों की that is तरफ why इच्छा भी नहीं होती है। he doesn't have any जैसे ही सोता है वो desires अपने towards मस्तिष्क the में sense objects. That's why उसको the कोई नींद या baby नींद नहीं is आती, happy in नींद नहीं himself. आता है, उसको If he gets his sleep, if he नींद is आने getting के his बाद food, he is वो just not bothered about anybody or anything else. He doesn't plan about anything. लेकिन वो तो केवल एक अविद्या की स्थिति है। यहाँ पर जो बता But रहे that हैं is just a state of वो avidya. है Here, कि what Bhagavan is telling is about the jnani. ज्ञान की स्थिति में पहुंचकर ऐसा होता है, फिर Reaching a state of jnana, भगवत there कर्म में you become like a जो child. सिद्ध पुरुष होते हैं That's why it is said शिशु बता that the Siddha Purushas, बच्चे की तरह they are also like नहीं children. कि बच्चे की तरह वो अज्ञानी होते So, हैं, like being like children does not mean that they are fools or they are they do not have कुछ gyan. चलता रहता But है, the meaning is like चित्त uh, शांत रहता है। how a child, उस his प्रकार chitta is satisfied. So this Siddha Purusha, his chitta is also like a satisfied तो and इसीलिए stable like यहाँ that पर of a बात की child. गई है यत चित्तात्मा। So for that Bhagavan is using this word. तो उसके मन में फिर कोई कल्पनाएं नहीं होती हैं, So then he does not have any नए other महल खड़े नहीं करता है। desires in the mind. He does not नहीं तो हमारा keep मन creating mansions or palaces in his mind. कल्पना में लगा रहता है, Otherwise, our mind is प्राप्त always करने in a state of भोग के imagination प्रति to get this or इस that. कामना के कारण। और दिन में भी कल्पना करते हैं, रात को सोते हैं तो And उसमें we do daydreaming and we dream at the night also. उन We कल्पनाओं में ही keep खोए रहते हैं। imagining and we are always absorbed in our इस कारण imaginations. वो That व्यक्ति is why वर्तमान में नहीं जीता है, such a person does not live in the भविष्य में present. He always lives in the future जीता है। due to these तो ये जो imaginations. यतचित्त आत्मा है, ये व्यक्ति जो निराशी है So this वही है जो person who is Yatachitta Atma, who is Nirashi, जिसको जितेंद्रिय who is होना है, devoid of craving for enjoyment, only he is संयम happy. करना और उसके He विषय से has न control over his senses, नियंत्रण करना, and of that also most important यही is संभव है to control the mind. जब So वो this is only possible when विषयों के प्रति उसका आकर्षण समाप्त हो जाए, उसके मन when में his attraction to sense मन objects में has gone away. तो फिर वो हर चीज में जागरूक रहता है। So he remains aware हम in everything. अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं Whatever we वो एक do प्रकार से in our सोते हुए, life, कल्पना we are करते हुए, doing as सोते if हुए in a करते हैं। state of sleep. Sleep in the sense that we are absorbed in the world of our imagination. We do not perform actions out of awareness. लेकिन You भोजन are करते eating समय food, but दिमाग कहीं और घूम रहा है, mind is wandering somewhere else. क्लास में बैठे हुए हैं You're sitting in मन में कुछ और class, कल्पना में है, but mind is absorbed in your imaginary दूसरी world. जगह है। जब करते हैं तब तो और We ज़्यादा sit for चलता है, japa. सबसे There ज़्यादा। the mind does maximum imaginations, as if mind gets 10 times more power दूसरी during जगह तो japa. चले, लेकिन जब आपका In जप the करने का समय for आता other है activities mind is not so तो active, बाकी सब but चीज़ें when भूल it comes जाते to हैं कि doing आपको japa, आसन लग
then as if the mind has got an injection of a special tonic, and then it becomes extremely powerful during japa and it runs at तो maximum ये speed. उसका मूल कारण हमारी So कामनाएं what हैं, is the main reason behind that? हमारी Reason is our वासनाएं kamanas, हैं, our desires, our attachments to हमारी the इच्छाएं हैं, desires, तो वही हमें our attachments to the खींचती results. रहती हैं। That only तो keeps our भक्ति mind का मतलब है कि wavering here जैसे and सुन there. लिया हमने, Japa means that I have left आइए everything थोड़ा and समय now निकाल कर I उनके am भजन को केंद्रित करें। uh, focusing my mind तो on उसके बाद Bhagavan for whom I have taken out क्या होता time. है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा क्या But होगा। the mind thinks that if you do like this, then what will happen to me? बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, Like when तो children थोड़ा they grow, एक पैदा होता है, तो some vivek वो arises, अवज्ञा and करना चालू कर देते then हैं। they start disobeying the वो parents दिखाना चाहते हैं कि हम because भी they ऐसे also हैं, want to show that we are तो इस also प्रकार से something. ही मन करता है, वो दिखाता है तुमको कि ऐसे कैसे हो जाएगा The कि mind also behaves सब like कुछ this, छोड़कर और यहाँ पर लगा that दो। how can ऐसा you होना just चाहिए give कि me up and जैसे focus मैं uh, on विषयों में japa? हूँ और I अगर मैं have उन्हें always been हटाना चाहता absorbed हूँ in these sense objects. तो Now you निराश want नहीं to होगा। make me rid of all that. So mind तो ये doesn't like चुनौतीपूर्ण this. है। It is filled with तो desires. इसलिए हमें अभ्यास करना है कि जो भी कार्य That's करते हैं why we have to do उसमें abhyas, do practice, that whatever we do, we should do it बेहोशी से with ना करें। awareness, नहीं तो not क्या होता है कि जिस चीज़ not की being आदत हमारे लग unconscious. जाती है, Otherwise, what तो happens भोजन is को when हम you छोड़ नहीं become सकते। habituated for तो doing उसमें कोई anything, बुद्धि लगाने की तो जरूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि so सोच we के are खाना है कि anyway हाँ मैं eating food, so you don't इसको have to अगर plan for that, that I हल्का have to टाइपिंग plan, I have to करना है put my hand there. तो पहले Like टाइपिंग suppose you करके are typing देख कर and you करना are है। doing typing for the first time, you see every letter and then you जब press उसका the key. अभ्यास हो जाता है But when तो you धीरे are धीरे used to बुद्धि that, चली जाती है। then even without तो seeing, शुरू में तो your आपको लगता है कि fingers बहुत move समय towards लगेगा the अभ्यास करना perfect key on पड़ेगा, the keyboard. और बाद में सब अपने आप So हो जाएगा। initially you have to focus on that, and after that it और runs बात in करते auto mode. करते टाइप भी करते रहें, Even while talking, you can गाड़ी keep भी doing चलाएं तो typing. फोन पर भी बात कर लें। You are, let's say, driving and you are talking on the तो phone उसमें से also. हमारी फिर जागरूकता हट जाती है। So then what happens? We lose our समय awareness पाने के from लिए that activity and we start planning for doing something else on निराशी है, only. But चित्तात्मा such a है, person who is nirashi, who is devoid ऐसा of craving for enjoyment, he always works नहीं as करती if है, लेकिन like जो कार्य someone करने who योग्य is है typing for the जिस first प्रकार time. से वो करता है उसी प्रकार से उतनी जाग ऐसा नहीं है कि वो टाइपिंग एक्सपर्ट नहीं बनेगा, लेकिन उतनी जागरूकता से ही रहता है वो। It is not that he will not be तो expert in typing, but he is always aware about everything that he is doing. His mind is not wavering here and there. जागरूकता से ही करता है। Whatever actions he performs, और he त्यक्त does it सर्व with full परिग्रह, awareness. तो त्यक्त का मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ So छोड़ देगा, tyakta sarva parigraha, tyakta does not mean that he will देखो give up ऐसे everything. चलेगा, ऐसा नहीं है कि सड़क पर बैठ जाएगा सब कुछ छोड़कर अपना It मकान is not that he will give up everything and sit on the जो roadside. कार्ड है उसको भी किसी को दे दे, ऐसा नहीं है। तो सर्व परिग्रह त्यक्त का मतलब है कि उसमें उसकी आसक्ति नहीं है, What it means is that he does not have attachment to क्योंकि that object, समस्या आसक्ति की है, because the विषय main वस्तु की problem नहीं है। is with attachment, not with the sense object per se. विषय वस्तु तो राजा जनक के पास भी थी, Even King Janaka had lot of उसमें sense आसक्ति नहीं objects, थी। but he did not have any attachment towards them. तो इसलिए जनक ने कहा था कि अगर ये पूरा राज्य भी जल जाए तो मेरे को कोई That's फर्क why नहीं Janaka पड़ेगा। had लेकिन said वो चाहता that है कि even if this whole अगर kingdom ऐसा हो gets जाता burnt, है it doesn't matter to me. That does not mean that he wants that. तो उसके He मन doesn't में want कुछ भी that, but even if something happens, his chitta will not be कुछ हो disturbed गया तो उसमें वो क्या कर because what सकता है। has happened has happened. He can't do anything about जब it now. आसक्ति होगी तो आदमी रोकर बैठने लगेगा, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मैं मर गया, But when कहाँ asakti attachment is सब there, कुछ the खो person दिया। will sit crying that now I lost तो everything. इसलिए What will I eat? What will I drink? He तो starts thinking like this. आसक्ति का त्याग करना ही यहाँ पर So, त्याग शब्द का अर्थ है। uh, here कोई भी tyaga, व्यक्ति होगा giving up means to give up तो the उसको attachment only, कपड़ा चाहिए, because every वस्त्र person he चाहिए, wants, he has some basic needs: सर्व का home, मतलब है कि उसको clothes, कुछ नहीं है food. तो फिर जीवित कैसे So रहेगा। sarva means everything. If he gives up everything, how will he even survive? भोग बुद्धि का त्याग करना, So what it means here is उसको to ऐसा give नहीं up सोचना the कि मैं ही enjoying mentality from these sense सभी के objects. भोग्य हैं। Not to think that I am the bhokta, I am the उसको ऐसा enjoyer, करना these कि are मैं meant for अपने my स्वार्थ के enjoyment. लिए नहीं,
see everything as if सेवा में how लगे it can be used in the service of Bhagavan. और जो भी जिसको भी आप अपना मानते हैं, जिस पर आपका अपना स्वामित्व है, Whomever you consider that he is yours, you have some rights over that person, some power over that person. So to see that this person has been sent by Bhagavan and he is meant for Bhagavan's seva only. So if you have this mentality, then you will not become bound by these objects. दैववश किसी वस्तु की हानि हो जाती है So by Daiva, even if some object is lost or some person dies, तो यही देखना कि जैसे so भगवान just जिसको see भेजे that तो how Bhagavan sent that person, now he has taken him किसी or का her जन्म back. होता है तो हम खुशी मनाते Somebody हैं, is born, we celebrate. कोई दुख उठाता When है, somebody dies, लेकिन वास्तव we तो ये है कि जब जन्म हुआ suffer. तो सोचो कि But भगवान the ने fact दिया is इसको that मुक्ति, when the birth happened, you think that Bhagavan sent him or her, भगवान ले and लिया, on death, Bhagavan has taken him away. Bhagavan gave इस his संसार property, he में has इतने taken him सालों away. संबंध था, इतने सालों And तक for this certain time period, we have had some relation with that person, तो इतने सालों or तक maybe a relation to pay off समाप्त हो गया। previous debts, and now that relation तो is इस finished. दृष्टि से सर्व परिग्रह है, तो परिग्रह दो प्रकार के हैं, एक बाहरी है So, एक from this अंदर है। vision, Sarva बाहरी जो है Parigraha, वो कामना we है give up कि everything, हमारे external as well as internal. Internal is our desires or our understanding of relations, संबंध है, and external is all तो these sense objects. इसलिए So, जैसे this is बैंक why, का just like क्लर्क होता है a bank clerk, तो वो धन में व्यवहार करता है, उसके पास में धन he रहता है, लोग deals आते हैं with पैसा wealth, जमा करते हैं, he has money, people come, they और deposit हम उसको money in the bank. ले आते हैं। So suppose somebody comes and deposit इसलिए 10 lakhs, क्या so करे the वो clerk is not elated with धन that. If somebody तो takes दुख 10 lakh होता है, out of his account, the clerk is not उसके पास में पैसा suffering. ज़्यादा है कम है, इस सब उसके ऊपर कोई This प्रभाव does नहीं है, not make any वो difference तो to the जानता है कि clerk इसके whether पास ज़्यादा the पैसा है, तो मैं bank केवल customer, इसका एक what he उपाधि has more money, less money. This is he considers himself just like a trustee. He दिया is हुआ है कि कोई आए protecting that money, तो वो सही and he has been उसको given पैसा दे a दूं या इससे job पैसा ले लूं, that when somebody comes, either you deposit इसको that money जानने की or you जरूरत withdraw नहीं it. है कि हमारे पास So जो धन है वो similarly, व्यवहार के लिए we should also think like that, that whomever we have in our life, whatever we have, it is all for vyavahar, for using जिसके पास में in अगर Bhagwan's seva. कुछ आ जाए संपत्ति, If you get तो something उसमें से more ले लें तो उन्हीं का ही है, or Bhagwan takes इसलिए away जिससे हमारे something from हृदय you, में it is all his ना only. प्रफुल्लता हो, So आनंद in हो, our heart, we ना neither कष्ट become हो जाने पर, elated, तो we ये don't become excited, or we don't plunge into suffering when we जिससे lose हमारी that object. मन बुद्धि है वो नियत रहेंगी, वो So if we are in this state of mind, नियंत्रण में then रहेंगी, our mind will be self-controlled. तो इसलिए भगवान That's why कहते हैं। Bhagavan is explaining here. और इसके बारे में And regarding आगे this, जाके he कहेंगे, speaks many times. He इसका will जो speak विस्तार later पूर्वक also वर्णन करेंगे, इसको when he will योग मार्ग describe कहते हैं, योग ही Ashtanga Yoga, Raj Yoga in the sixth chapter. आत्मानम रहस्य स्थित एकाकी यत चित्तात्मन निरासी और अपरिग्रह, यही शब्द का प्रयोग वहां भी किया है, निराशीर Here, there अपरिग्रह also he has used the और same word, अपरिग्रह। Nirashir and Aparigraha, तो ये चाहे Yatachitta. कर्मयोग है, So चाहे whether it is Karma Yoga or Raj Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, सब जगह वास्तव everywhere में भावना इसी in प्रकार की reality, रखनी है, mentality should be like this इस only. भाव से हमको With कार्य this करना है, mentality, we should work. और तभी हम इस कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं और And only then can we become liberated from the bondage of karma and अगर experience हमारी the सारी spiritual substance. Because वासना, if our सारी entire चित्त bhavana, वृत्तियां all our chitta vritti, केवल भौतिक वस्तुओं में ही व्यापृत रहेंगी, उसी में लगी if they रहेंगी, are always immersed only in तो material हमारा चित्त जो objects, है वो then our भगवान में chitta, कैसे लगेगा। how can it focus चित्ता on विषय Bhagavan? रस कृष्णा भक्ति सुदूरता, जो चित्त जो है वो विषय में आविष्ट है, The chitta that is immersed in कहाँ से आएगी, sense objects, how can it have उसको bhakti for विमुख तो Bhagavan? करना पड़ेगा ना उसको, लेकिन
इसका So you मतलब have ये to नहीं है कि make it empty संसार for Bhagavan. के हमको कहीं और जाना है, हमको But जंगल this doesn't mean that we have to give up everything and go to the Himalayas or in some forest or sit inside some say cave. Because wherever you go, you are living in the material world only. But you have to live उसमें in a लीन way ना हो। that you do not become implicated यही अर्थ है in this इसका। bondage of karma by you have to remain detached. तो यहाँ ये निवृत्ति परायण कर्मयोगी है, यानी कि जो कर्मयोगी ज़्यादा कार्यों में So अपने आप here को लिप्त नहीं he's करते talking हैं, about a nivritti parayan karma yogi, means one who वासनाओं से अपरिचित। performs only that much karma that is required for maintenance of his body. तो वैसे होता है कि शरीर से कर्म करता है, तो शरीर Shariram से तो karma सारे here कर्म हो means जाते हैं, that he does karma with his body. So कर्म all karmas are done with his with body only. इंद्रियों से होते हैं, मन से होते हैं। तो शारीरम Karmas are done by body senses. So निर्वाहमात्मक shariram karma वो means कर्म करता he है, does karma just for और maintenance of body. बाकी उससे ज़्यादा वो कोई कर्म में लिप्त नहीं होता है, अपना बाकी He समय जो does है not वो become more attached भगवत सेवा to the में लगाता karma. है, चाहे वो He नाम जपने में हो, engages his remaining शास्त्र time विग्रह in के seva of अभ्यास में हो, Bhagavan, whether it is शास्त्र Nam Jap अध्ययन or में, seva of यानी Vigraha कि अपना or दैनिक reflecting समय on जो है Shastra, meaning वो that सेवा he में देता है। gives maximum time in seva, और शरीर के लिए उतना ही काम करता है and for जितना body he उसकी जरूरत है। works only that much which is sufficient for his तो इसको bodily हमें साधक maintenance. को भी सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम काम में So a इतने लगे sadhak should रहते also हैं कि think about that. साधना के लिए Many समय नहीं times it मिलता। happens that we become so much absorbed in our work that we do not have और time for our sadhana. कर्म में लगे रहें तो Day हमें and night we सोचना are कि क्या just busy वास्तव in में work. जितनी मेरे को So we आवश्यकता should है think that do I क्या मैं actually अपनी need आवश्यकताओं को so कम कर much? सकता हूँ। Can I reduce my needs? कुछ ऐसा होता है कि दूसरे लोगों का जो स्तर है जीवन शैली का, It also हम चाहते हैं कि happens हमको भी उसी that we प्रकार का want to जीवन copy others' lifestyle. होना We चाहिए, should also have big home, big car, costly हम भी car. उसी प्रकार के We should वस्त्र पहने, also उसकी we मुद्रा wear बनाते रहें, same मतलब costly clothes. So एक then for that समाज you में will have to work very hard, but that will not lead to इसलिए any अपनी spiritual आवश्यकताओं को advancement. नियमित करके रखें, So to keep the इसी को बोल necessities सकते हैं कि limited, नियमम केवलम कर्म। क्योंकि जितनी हम अपनी आवश्यकताओं को नियमित करके रखेंगे because तो the more we limit our विकसित जीवन जो necessities, होगा the we will get more and more time मुक्ति के लिए, for advancing उसको on the इसीलिए spiritual भगवान path. यहाँ पर So देते हैं। that is what Bhagavan is advising लेकिन here. इसका मतलब ये भी नहीं है कि But हम this आलसी हो also जाएं, does not mean that हम we बैठे ही become रहें, lazy. Bhagavan is काम saying that करें, work only सोचो, that much. बैठो, बैठ के So काम that करो, doesn't mean that in the other time you just लेटे sit, रहो। watch cricket match, तो इसके लिए नहीं television. कह रहे हैं यहाँ That is not पे, Bhagavan आलस्य के is लिए नहीं कह what रहे हैं, Bhagavan is advising here. ये He is not भगवान के लिए advising to है कि become आप lazy निषिद्ध कर्म में करो। or तो you do आलस्य और प्रमाद nishidha में कोई forbidden karma. भेदभाव नहीं है, So alas and pramad, शारीरिक laziness आवश्यकताओं and को कम करके engaging in nishidha karma, this is not prescribed, but rather doing working for bodily maintenance with limited necessities and giving remaining time in sadhana, तो उसमें जितना समय हम निकाल सकते हैं उतना अच्छा है। because human form of और life has been संसार given से for होकर that के कर्म purpose करता only. है तो So the more we give पाप time for that, the better it is. तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर पाप में लिप्त नहीं So होता, such a person, तो then वो he does not become implicated in तो पाप sinful का मतलब है कि कर्म reactions. के बंधन में नहीं So फंसता, here papa means कर्म he में does not become implicated या in दुख, karma bandhan, in bondage of karma. ऐसी Sin स्थिति means suffering, दुख मिले a या state ऐसा किसी that will परिस्थिति give में दुख us में आदमी suffering परिवर्तित or हो, activities that तो इसलिए वो कहते bring हैं कि उसका तो suffering. फिर So इस Bhagavan प्रकार का says कर्म बंधन that नहीं होता है, वो कर्म such a से मुक्त person, हो then जाता है। he will not have bondage to इसीलिए karma, कहा था he ज्ञानाग्नि remains दग्ध free प्रमाणम, from इसलिए bondage. ज्ञान की अग्नि से कर्म दग्ध हो जाते हैं। और यहाँ पर ये बताया है कि वो कर्म करते हुए किस प्रकार से उनमें लिप्त नहीं होता, उनसे उनका बंधन नहीं होता। और फिर इसी को थोड़ा और आगे बताएंगे वो।
So later he will expand प्रकार से व्यक्ति more on this, that how बंधन से मुक्त person remains free तो from bondage to मेडिटेशन के karma. समय ही So आसक्ति we को will समझ learn सकते that in the next class. Today we will stop here, and if you have any question, you can ask. बाबा जी, मेरा एक प्रश्न है। हम अपनी कामनाओं तथा उसके फल से Question. इतने Uh, अभिभूत हो जाते हैं we become so much absorbed in our desires and their results that while performing actions, we don't even think about सच्चाई से the potential results. So, जब भी मन how, में कामना what आती to है do? So, answer, whatever उससे desires पहले ही you उसको यही विचार get, करना है first of कि all, इस you कामना should का deliberate on that, मेरे मुख्य that उद्देश्य से संबंध है is the fulfillment of this desire जो मेरा connected उद्देश्य है with the main goal of my उससे life. संबंधित है, क्या उस मेरे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है या इसके Is it विरुद्ध है। helpful in fulfillment तो of ये my, जब तक आप in achievement of my goal, इसको नहीं the विचार main करेंगे goal of तब life? तक आप कामनाओं के चक्कर में Unless पड़े रहेंगे। you deliberate on this, इसलिए you will remain सबको implicated in the अपने आप को अपने network of the उद्देश्य desires. स्पष्ट होना चाहिए That's why it is very और important that you should be very clear about the goal of your life. तो उससे And पहले then ही आप whatever you अपने do, मुख्य उद्देश्य में then you check, सहायता कर रहा है या मेरे is पीछे it पड़ रहा है। helping me in attaining तो my इसका goal, or it is taking me away from my goal? पद्धति है उसका चेक करने का तरीका। This is the checking method. गौर जी का प्रश्न है, Question. जब मैं जीवन में When I अधिक want to follow a basic spiritual attitude in life, despite as a grihastha, there are some worldly things to maintain life for family. How can I become free of attachment to the fruits of action when they are the reason for सब doing the कर्म उनके लिए action? कर रहे हैं लेकिन उनमें आसक्ति मत करिए। Answer. Yeah, you are working for आसक्ति का result, मतलब but you should विपरीत not be अर्थ है। attached to the result. तो आपको Being बहुत not being attached means when you get the result, you should not be very excited, and when you don't get it, इसलिए you should आपको not plunge into आपने जो suffering. भी आपको मिलेगा, जैसे You आपने had a requirement, you had a need, and you got कोई it. बहुत बड़ा धन Like I gave the example for प्राप्त blank bank प्राप्त clerk. होता है उसके लिए जो साधारण है। तो ये आसक्ति So when a customer brings lot of money to deposit, the bank clerk is not elated. होता है ना पहले। So this attachment is what we have to give up. कर्म फल में संग माने आसक्ति का त्याग करना। So anasanga means to give up the attachment. थोड़ी कहा कर्म फल का त्याग करो। Did he say that you give up the result? He said that tyaktva karma phala asanga. That's what he is explaining. He is not talking about giving up the result. He is talking about giving up the attachment to the result. Question. In verse in 4.20 श्लोक में आसक्ति के लिए प्रयोग किया गया in verse शब्द 4.20, the word for attachment asanga seems to be a double negative, not attached. Does sanga give the same meaning as asanga? संपूर्ण रूप से संग। So here a means complete. जैसे शक्ति और आसक्ति Like you एक say होता है sakti and असंग asakti. One is शक्ति asakti. और असंग, ये विपरीत अर्थक है। संग असंग और आसंग। संग Sanga, का मतलब asanga and asanga. सक्त होना, Sanga means असंग का मतलब to उसमें be आसक्त ना होना, और आसंग का मतलब connected, पूर्ण रूप से। attached. Asanga means not attached and asanga means completely attached. ठीक है, प्रार्थना श्लोक। हाँ, मेरा एक और प्रश्न है बाबा जी कि So मैं किसी भी question दैनिक कार्य को करती हूँ that तो whenever उसमें I स्वयं perform some थोड़ी daily तकलीफ duty, होने में खुद को कठिनाई महसूस करती हूँ। I feel उदाहरण difficult के लिए खाते समय to केवल खाना put या my mind fully into that ऐसा activity, क्या like है while जिससे eating, दैनिक दिनचर्या करते समय मन को focus, केंद्रित awareness. किया जा सके? Is there any कोई नहीं है इसका mantra by which I can focus my mind fully on whatever I'm doing? Answer, there is no mantra, it is just about practice. कौनते वैराग्येण च गृह्यते। It is just about practice. इसका तरीका केवल अभ्यास ही है। It is just practice. धीर ललित जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। Hello, Pranam Babaji. Thanks for a wonderful class. I'm just coming back to this concept of Atma Sakshatkar, where we have to become fully aware and be absorbed in the self. And
the reason I'm talking about this is in our pursuit for pleasure or happiness, we've always trying to relate with matter, which is not of the same nature as the self, and therefore it has no ability to satisfy the self. And time again, after engaging with it, we realize that actually the desire for it dissipates, and that's the actual pleasure we're getting. And the amount of time we've interacted with matter is equal to the time we've been disappointed with it. That means every time we get relief from the desire from it, that's the time we come in contact with the Atma. So my question is, if the Atma, if we've experienced it equally amount of times, how come the attraction for the Atma doesn't grow as much as for the attraction for matter still stays in it? And the second part to that is, you said it's manyata, meaning with your mind you've accepted it, in your mind you're relishing it. So now we understand the mind is also outside of the Atma. So then relishment of the Atma can only exist with the mind, and mind is also for temporary nature. So how do we reconcile and understand this concept? तो उनका प्रश्न ये है कि So the question is that when किसी चीज की इच्छा होती है, we have desire for something, वस्तु हमको प्राप्त हो जाती है, we obtain that object, को कुछ खुशी then प्राप्त होती है और we experience some happiness, but actually that happiness is not by that object, but because that desire has gone away, and we have some feeling of Atma. So his question is that the way we have attached attraction towards sense objects, why not towards Atma? So the main reason is avidya, इस प्रकार से ignorance. तो आपने समझा है, So as I have explained, ऐसा हमारा अनुभव तो नहीं है ना, I have explained, but we do not have experience of that. Due to avidya, we think that whatever happiness we are getting, it is by those sense objects, the vishayas. And because we think like that, our attachment is in the sense objects only, not in the Atma. करते नहीं है ना कि वास्तव We do not think about that, आनंद या खुशी that हमको मिलती है, this happiness that we are experiencing, इसका from where are we getting it? सोर्स है, इसका स्रोत क्या है, उस पर हम विचार करते नहीं है और अज्ञान We do है, not think about that, and due to ignorance we think that it is that happiness is coming from the sense objects only. क्योंकि ऐसा आप विचार ही नहीं करते हैं। So you never deliberate दूसरा that you get क्या happiness है, from the Atma. स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट नहीं हुआ था दूसरा क्या। And the second question what you said I didn't understand. That means it's with the mind we think that this object can give me pleasure, and then when the desire for it dissipates, then we get contact with the Atma or the relief or the Atma Anand. So even to appreciate the Atma, there is the mind, and we understand that the mind is separate from the Atma. So how are we supposed to reconcile that relationship? तो ये जितना भी आपको अनुभव होता है, So whatever you experience, it is all in the mind only. अनुभव आत्मा का साक्षात्कार हो, Whether it is self realization of Atma or Bhagavan or material objects, the medium is mind only. इसको समझना पड़ेगा। So you have to understand को this. जो भी अनुभव होता है, Whatever one experiences, material or spiritual, नहीं होता है, that experience happens in mind only. Whether it is of external objects or internal or samadhi in dhyana, मन ही रहता है। so mind only is there. प्राप्त करने से जो कहते हैं कि अब वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, So you say that you become situated in the self. So there also whatever he is experiencing in self-realization, it is through mind only. There is no other way. या फिर वो अपने आप में मन से अगर Otherwise, छोड़ के बैठेगा तो उसको अपने आप में if he disconnects from mind and situates himself in the Atma, he will be situated, but he will not experience anything. आपको अपना अनुभव होता है, लेकिन उस समय आप कहते नहीं है कि मेरे को मेरा अपना अनुभव हो रहा है, क्योंकि उसमें समय मन से भी संपर्क हट जाता So है। that time in deep sleep, you are disconnected from the mind also, बाद में स्मृति and you have samskaras प्रकार से सोया। in the chitta. You remember that you slept happily. गुस्तावो जी का प्रश्न है कि क्या परिणामों से अनासक्त होना भौतिक भावना नहीं है?
यदि ऐसा है तो एक भौतिक इच्छा जीव को कैसे लाभान्वित करती है? तो परिणामों से अनासक्त होना भौतिक कैसे है? इसमें भौतिकता क्या है? So, isn't detachment from results merely a material emotion? If so, how can a material emotion benefit the यदि ऐसा jiva? है तो जीव को भौतिक इच्छा कैसे लाभान्वित करती है? भौतिक नहीं है वो। That is not material. प्रणव जी का प्रश्न है कि सरकारी Question: while working in government service where targets are everything, how to get rid of results? परिणामों से छुटकारा की मैंने वही बात कहा ना, वो परिणाम So, as I said, that you will get the results, परिणाम में आसक्ति नहीं रखनी। but you should not have attachment to the result. That's what Bhagavan is saying. थोड़ी कहने के तब तो कर्म Is he saying that मतलब परिणाम give up the result? कर्म का परिणाम, कर्म का फल, तो उसमें आसंग की बात कर रहे हो। There he is talking about attachment. Give up the attachment. मोहिनी जी का प्रश्न है कि आपने Question: बताया कि मन सोचता you है explained कि that अन्य जीवों mind को thinks that whole लेकिन मन तो life I have been absorbed in something, but mind is material. Mind cannot think. उसमें शक्ति आती है, चेतनता शक्ति, जैसे बल्ब जो है So thinking means it gets लेकिन जो उसमें power by the Atma. तो वो प्रकाश देता है। The power gets infused by the Atma. Similarly, mind also, like चेतनता का प्रवाह the bulb. So mind is material, but when there is the power of spiritual energy from Atma, then it works. धन्यवाद प्रणाम बाबू जी महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि आपने जैसे 4:21 में समझाया कि जब एक व्यक्ति को सब उसकी स्थिति ऐसी रखनी चाहिए कि जीवन निर्वाह के So as लिए you उसे explained that a person's situation should be such that his basic needs are fulfilled. So suppose a person is in such a situation पद ऑफर किया जाता है, and वैसे then उसे वो पद the ग्रहण government करने gives him के some position, some offer of some position, then while accepting the position, what should he think? Should he think that I am accepting it for some तो उसकी social मानसिक service or स्थिति के whatever? ऊपर है कि वो किस So answer, it depends on his mental state. Why is he taking? As I told earlier, दूसरा उसके पीछे भाव होता है। that there is behind karma, there is the activity and there is the bhava, and out among these two, bhava is the main thing. So it depends on what is your bhava motive behind that. क्रिया तो It doesn't depend only on the kriya. ऑपरेशन करता है वो भी काटता है, The doctor is doing surgery, he is also cutting the body with अत्याचारी है वो भी किसी के शरीर को चाकू से काटता है। the इन दोनों का भाव अलग अलग है ना, तो वही of क्रिया उसका knife, and some thief or murderer, he is also attacking the body with some sharp object. So it depends on the bhava, कर्म बंधन से मुक्त why one कराना is doing that. ऐसी So स्थिति में if somebody उसे क्या if this person has to become नहीं, free उसको यही from सोचना है कि the मैं bondage to कुछ karma, नहीं ले रहा हूँ। what should he think? So so here that such person has to think that why am I accepting this position? Because here in Gita, Bhagavan is telling यही सोचना है कि मैं किस लिए ग्रहण कर रहा हूँ। आपको कोई कुछ भी ऑफर करे, anybody can offer you anything. If my stomach is full, कोई आकर मेरे को गुलाब जामुन I don't need food. If somebody brings gulab jamun, should I eat that? But because I don't need. तो अगर आपका उद्देश्य आध्यात्मिक है, So if your goal is spiritual and if your needs are fulfilled, बेसरकार then government offers or anybody else offers, then you should think that why should I accept it, क्या लाभ होगा। and how will it help me in fulfillment of my goal. That's what I said. In before doing any activity, first of all you have to check that while by doing this activity, am I moving towards achieving my goal, or I am going becoming deviated from my goal. So that is what you have to think, that why you want that position, will that help you in achieving your goal, or it has nothing to do with that, or is it creating an obstacle in that. This is what you have to decide. This is where you have to use your intelligence. This is where knowledge is required.
मोहिनी जी का प्रश्न है कि तो जब Question के समय मैं नाम during नहीं japa, होना चाहता, ये सोच वास्तव में कौन करता है? so during japa, when the thought comes that I do not want to be absorbed in japa, who thinks that? So your mind only thinks. Who else is thinking? Is somebody coming from outside to ये think or समझ what? रखिए कि इस समय आपकी जो स्थिति है ना, ये एक You have to इस understand समझाने के लिए that कहा जाता है कि आत्मा अलग है और currently, और एक हमारी for वर्तमान explaining स्थिति it is ऐसी है said that जिसमें atma is मन different, बुद्धि और शरीर mind is different. But in our current situation, it is not that atma is sitting separately, mind is separately. Currently, both are like joined together. दूध में मैं पानी मिला दूं, Like there is milk, there is water. Now if I mix water in milk, now if I tell you that this contains milk and water, but as of now both are mixed. So when I am tasting, am I tasting milk or water? Both are mixed. लेकिन वो समझाने के लिए कहा जाता है कि But to जिसमें दूध explain में it मैं is पानी said मिला that दूं, there is milk also, there is हमारी water स्थिति ऐसी also. है। So our situation is like बार this. बार किए जाते हैं कि ये कौन सोचता है, कहाँ जो So these type of questions are raised again and again, that who हमारी thinks. स्थिति ऐसी है कि दूध और पानी Our situation is like milk and water mixed. वास्तव में दूध पानी मिलता नहीं है, दूध दूध ही रहता, पानी पानी Actually, they cannot be mixed. Milk is milk, water is water. Milk cannot become water, water cannot become milk. Molecules of milk will always remain molecules of milk, and molecules of water will always remain molecules of water only. But to us, they appear like same only. Similarly, Atma and Sharir, they cannot become one, but currently they are joined in such a way it appears as one only. Now they are asking that who thinks, who tells. What can you say? Both are together only. दूध को चखते हैं जिसमें पानी मिला हुआ है, तो अब दोनों को ही चख रहे हैं। When you are tasting that adulterated milk, so you are tasting both milk and water. यूट्यूब से प्रश्न है कि कृष्ण ने द्वारिका क्यों बनाई? भगवान चैतन्य महाप्रभु और भगवान बुद्ध ने Question: Why did Krishna make Dwarka? इन दोनों ने कामनाएं त्याग दी, परंतु भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं। Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu and Buddha, he gave up desire, but Krishna made Dwarka. So how do you know that Krishna, who says that he had desire? We just 3 or 4 verses back only we studied in Gita. कि मेरी कर्मफल में स्प्रिया नहीं है, He said that he does not have desire in karma phala. So then what praman do you have? भगवान ने तो स्पष्ट कहा था श्लोक नंबर 14 में, In the 14th verse, he said, कर्मफले स्प्रिया इति माम यो भिजानाति कर्म घृण से बंध्यते। ठीक है, प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय
नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं न यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं हरि ओम तत्सत्।